A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Today we are going to discuss the topic of unit number 4, that is classification of living things. So living things are classified into different groups. What we will discuss in this chapter is living things are classified into different groups, यानी कि जानदारों को different groups में classify किया जा सकता है. कौन कौन से? टेरेस्ट्रियल मीन्स खुश्की पे रहने वाले, एक्वेटिक मीन्स पानी पे रहने वाले, एम्फीबियन पानी और खुश्की दोनों पे जगह पे रहने वाले, एरियल हवा में रहने वाले जानवर, एंड आर्बोरियल दरख्तों पर रहने वाले चरिंद परिंद. डिस्क्राइब द एनवायरनमेंट्स इन विच एनिमल्स लिव. ऐसे एनवायरनमेंट्स को बयान करते हैं, के बारे में डिस्क्राइब करते हैं जहाँ पर जानवर रहते हैं. प्लांट्स ग्रो इन टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एनवायरनमेंट्स बोथ. प्लांट्स जो है वो खुश्की पर और पानी दोनों जगह पे ग्रो कर सकता है. एनिमल्स में भी हार्बीवोर्स. एनिमल्स या तो हार्बीवोर्स हो सकते हैं, हार्बीवोर्स मीन्स जड़ी बूटियाँ खाने वाले, कार्निवोर्स मीन्स के गोश्तखोर, और ओमनीवोर्स जो कि प्लांट और एनिमल्स दोनों खाते हैं, और पैरासाइट्स जो अपने होस्ट के अंदर रहने वाले जानवर. In order to understand this chapter, we have to understand what is classification. The process of grouping living things into different groups is called classification. यानी कि एक ऐसा process जिसमें living things को different groups में classify किया जाए. This is called classification. Different groups में रखा जाए. This is called classification. इसको classification कहते हैं. History क्या है? This classification was done by scientists in 18th century. 18th century में scientists ने classification की. They gave scientific names to the living things. उन्होंने living things को, जानदारों को scientific names दिए that could be easily used all over the world, जिसे पूरी दुनिया में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता. Robert H. Whittaker in 1969 classified them into 5 kingdoms. What are these 5 kingdoms? These 5 kingdoms are prototists, prokaryotes, fungi, plants and animals. In order to understand these 5 kingdoms, we have to understand these scientific terms. These scientific terms are unicellular यानी single cells organisms, यानी कि जिसमें एक सेल पाया जाए जानदारों में, उसे कहते हैं unicellular. Multicellular means more than one celled organisms, यानी कि ऐसे organisms जिसमें एक से ज़्यादा cells पाए जाएं. यूकैरियोट्स, न्यूक्लियस सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, यानी कि एक ऐसे जानदार जिसमें न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड हो. और प्रोकैरियोट्स, नो क्लियर न्यूक्लियस सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, यानी कि ना तो क्लियर न्यूक्लियस हो जिसका सेल मेम्ब्रेन हो. Yes, this is the table which can describe these 5 kingdoms. Either they are unicellular, multicellular, or eukaryotic or prokaryotes. So prototists is unicellular, and eukaryotes and prokaryotes are the unicellular and prokaryotes. Fungi is the unicellular and multicellular both, while on the other hand this is eukaryotes. Plants are multicellular and eukaryotes, and animals are the multicellular and eukaryotes. Yes, there are the examples of 5 kingdoms. Prototists. Amoeba is the example of prototist. These are unicellular organisms. Prokaryotes, these are also unicellular organisms, and bacteria and some types of algae. Fungi, these are mushrooms, molds and yeast. They are both unicellular and multicellular. Plants are also multicellular. All green plants and animals is also multicellular. All multicellular animals. Concept check. Why do we need to classify things? हमें things को classify करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? This classification is used all over the world to recognize things. ये classification पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती है चीज़ों को पहचानने के लिए, इसलिए हमें ज़रूरत पेश आई. Living things are classified into how many kingdoms? जानदारों को कितने kingdoms में classify किया जा सकता है? That is 5 kingdoms. What is the name of the scientist who developed the kingdom classification? That is, the name of the scientist who developed the kingdom classification is Robert H. Whittaker. Animals are further classified as vertebrates and invertebrates. The animal kingdom is divided into 2 main groups. The animals with backbone are called vertebrates, and the animals without backbone are called invertebrates. What are the examples of invertebrates and vertebrates? Fish, birds, reptile, mammals and amphibians are vertebrates,
while animals like snails, spiders and such kinds of worms are the examples of invertebrates.